Um, Good afternoon, my dear friend. Hope you all are good. Good afternoon. Okay. So, friend, please open your computer book, my dear friend. Please open your computer book, chapter 2. Open your computer book, chapter 2, page number 16. My dear friend, please open page number 16. Okay, Samiksha, sit in your particular place. Samiksha, sit down, beta. My dear student, please open page number 16. In last class, my dear student, in last class, we have learned how to create a folder. Okay. Now, today we will learn about how to rename your folder, how to select a folder, okay, how to delete a folder, and how to move a folder. Today we will learn 4 topics. First topic is how to rename your folder, how to move your folder, how to delete your folder, and how to select your folder. Okay, so let's start our first topic. Our first topic is how to rename your folder. Uh, Apurv, if you have any doubt, if you have any query, beta class के end में पूछेंगे. Okay, now friend, we will continue. Student, uh, first we create one folder. Okay, so first is how to create your folder. Okay, my dear student, first right click on empty area. First is right click on empty area. One list box is appear here. One list box is appear. Then we go to new option and click on new option. Then again one list box is appear. Look at here. This is your new list box. In this list box, my dear friend, you click on folder option. Okay. And write here your folder name. Suppose your folder name is class 4th. Okay, and press enter button. Look at here, your folder is created. Again I repeat. Okay, first you right click on empty area. One list box is here appear. Select new option. Then again one list box is open. In this list box, you click on folder. Okay, then write here your folder name. Suppose your folder name is class 4th students detail. Your folder is created. Then now come to second option, how to rename your folder. Second question is how to rename your folder. My dear student, if you want to change your folder name, you click rename option. Okay, so my dear student, we have 2 options to change your folder name. Okay, first option is direct and second option is indirect. Okay, we will learn one by one. First is direct how to change your folder name. First, you select your folder and right click on your folder. Okay, look at here. Here, one list box is open. In this list box, my dear student, you click on rename option and type here
class 4th students. Okay. Okay. Second option is my dear student, second way is um, how to create how to rename your folder. Second option is if your folder is anyone in drive, अगर आपका folder किसी भी drive में है, wait, suppose your folder is here. Suppose your folder is here. So you select your folder, then you select your folder, then go to home menu. You select your folder and then go to home menu, then click on rename option. Okay, look at here. आप इस ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं बेटा, फोल्डर रीनेम कर सकते हैं. ओके. Okay, now come to our second question. Now come to our second next question. Next question is how to delete your folder. Our second question is how to delete your folder. Student, if you want to delete any folder or file, you use three way. आप कितने तरीके से आप फोल्डर को और फाइल को डिलीट कर सकते हो? थ्री. कैसे? फर्स्ट वे इज my dear student, first way is first you select your particular folder. Okay, then go to delete option. First you select your particular folder and then go to delete option and click on delete option. Okay, here two option is appear. First is recycle and second is permanent. If you want to delete your folder permanently, you click on permanent delete option. Okay, and click on yes. Now come to second way. Second way is you click on particular folder and then press right button. Press right button. One list box is appear. In this list box, my dear student, in this list box, you click on delete option. In this list box, you click on delete option. Okay. Look at here. Your file is deleted. Next option is you click on particular folder and press Control D. Okay, your file or folder is deleted. Okay, done. Now come to next question. How to copy your folder. How to copy your folder. Okay, आप अपने फोल्डर को कॉपी कैसे करते हैं? बेटा कॉपी करने के ऑल्सो कितने ऑप्शन है? थ्री. कितने ऑप्शन है? थ्री. फर्स्ट इज डायरेक्ट, सेकंड इज इनडायरेक्ट और नेक्स्ट लास्ट वन इज शॉर्टकट की से भी आप कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल लर्न वन बाय वन. ओके,
अपूर्व, यू हैव एनी डाउट और क्वेरी बेटा लास्ट में पूछना, ओके नाउ, अभी नहीं. My dear student, look at here. There are three options to copy your file. Okay. First option is if you want to copy class 4th. Okay. You click on here and go to home menu. Look at here. Go to home menu and then click on copy to option. You press copy to option button. Okay. And if you want to copy this folder to desktop, you select desktop option and look at here, class 4th option is here. Okay, now come to second. Now come to second option. Second option is if you want to copy this class 4th folder, you click on here. Okay, then press right button. One list box is appear. In this list box, you click on copy option and then again click on empty area and then click on paste button. Look at here, class 4th folder is copied. Okay, next option is you select on a particular folder, press Ctrl C button. Okay, select particular folder and press Ctrl C button. Ctrl C button, and if you want to copy here your folder, then you press Ctrl V option. Look at here, your folder is created. Okay, we have three way to copy our folder. First way is direct. Direct means you click on home menu, go click on, then click on copy option. Okay, second is you click on any folder, press right button, then apply copy and paste option. Last option is you press Ctrl C means copy option and Ctrl V means paste option. Okay, done. Done, yes or no? Okay, now our next question is how to move your folder. Okay, how to move your folder. My dear friend, if you want to move your folder one place to another, you use a move option. Okay, friend, first you click on particular folder, sorry, you click on particular folder, press right button. Okay, then click on send to option, then click on send to option, otherwise you click on um, you click on particular folder, then go to move option. Okay, and apply desktop. Look at here, your folder is move, your folder is move. Okay, done. Done. Now come to next question. Our next question is how to select your all folder at the same time. Okay, my dear friend, if you want to select your all folder at the same time, you go to select option, select all, press select all option. Look at here, your all folder is selected. Second option is if you want to select your all folder and file, you press Ctrl A button. You press Ctrl A button. Look at here, your all file and folder is selected. Okay, your all files and folder is
selected. Okay, done. Done. Okay, student, please open your book. My dear student, please open your book. Please open your book, page number 18. Students, please open your book, page number 18. Student, please open your book, page number 18. Multiple choice question. Wait, Gatha. Yes. What happened, beta? Yes, Gatha. Ma'am, I have don't book. You don't have book. No issue, beta. I have already uploaded in your portal. Okay. Ma'am, Yes. ma'am, I will. Yes. I will. Yes. Beta Gatha, your voice is not visible. Your voice is not clear. Please message me. If you have any query, please message me. Okay. And Gatha, I am already uploaded in your portal. So please download um, uh, your, download your book PDF. Okay. Okay बेटा, आप अपने बुक की PDF वहां से डाउनलोड करेंगे. Done. Okay. So friend, please open your computer book, page number 18. Please open your computer book, page number 18. Now we will complete our multiple choice question. My dear friend, our first question is, Windows 7 is a dash-based operating system. Windows 7 is a dash-based operating system. Okay, Windows 7 is dash-based operating system. Okay, yes, Gatha. Who give me the correct answer? Gatha, yes. Yes, Gatha. मैम आपकी एकदम आवाज ब्रेक होके आ रही है. Okay, maybe there is network problem. Okay. Yes, Nishay, you know the answer. Nishay. Nishay. What happened, Nishay? मैम मैं पूछ रहा था मैम हमको क्या डाउनलोड करना है. Download. Nishay, beta, you have computer book. You have computer book, Nishay. Yes, ओके जिसके पास कंप्यूटर बुक नहीं है ना yes, वो मैम. हाँ मैं ये बोल रही थी बेटा जिसके पास कंप्यूटर बुक नहीं है वो पोर्टल से डाउनलोड कर ले मैं ये बोल रही थी ओके ओके निश्चय निश्चय बेटा इफ यू हैव बुक प्लीज कंप्लीट योर बुक वर्क ओके माय डियर स्टूडेंट यू नो द करेक्ट आंसर अपूर्व यस अपूर्व वैभव जानवी यू नो द करेक्ट आंसर अपूर्व यस अपूर्व यस अपूर्व यस मैम मैं ये बोल रहा था कि मैम आप उस दिन बोले थे ना कि फोल्डर में डालते हैं लास्ट टाइम दक्षिता को. क्या बोला था बेटा मैंने यस फोल्डर में अपन फाइल यस अपन नेक्स्ट क्लास में यस मैम वो मेरे को आता है वेरी गुड मैं सीख लिया हूँ. वेरी गुड हम बाकी सबको भी वो चीज ओके वेरी गुड हम बाकी सब माय डियर स्टूडेंट प्लीज कम फर्स्ट वी कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेज नंबर 18 फर्स्ट क्वेश्चन इज Windows 7 is a dash-based operating system. The correct answer is option A, GUI. The correct answer is option A, GUI. Please complete your work. Gaurav, Shaur, Dhanvi, Vaibhav, Navya, Shreyas, Kavya, Samiksha. Beta, please write down on your book. Write down on your book. Page number 18, multiple choice question. First answer is GUI. First answer is GUI. Okay. Now come to question number next. When you save your work with a name,
a dash is created. Again, I repeat the question. When you save your work with a name, a dash is created. Who give me the answer? My dear friend, the correct answer is file. The correct answer is file. Please tick on your book. Book पे टिक करो बेटा. Answer is, the correct answer is C, file. Okay, the correct answer is C, file. Now come to question next, question 3. Yes, what happened, Molly? Yes, Molly. Okay. Question number 3. Each file in a folder has a dash name. Each file. First answer is GUI, graphical user interface. First answer is A. First answer is A. Okay. Yes. Second answer is C. Second answer is C. And last, third answer is C. Each file in a folder has a unique name. Last answer is C, unique. Last answer is C, unique. Done? Okay, completed? Completed? Okay. Student, in this topic means how to create your file, how to rename your file, how to delete your file, how to move your file, and how to copy your file. In this topic you have any doubt, you have any query, please ask me. पूछो बेटा मेरे को, आज जो मैंने पढ़ाया उसमें आपको कोई डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी. दक्षिता. ओके. माँ मेरे को मूव कैसे करते हैं फाइल वो समझ में नहीं आया. मूव कैसे करते हैं फाइल को? ओके दक्षिता, वेट. Dakshita, look at here. Dakshita, look at here. Suppose Dakshita, look at here. Suppose your file is here. Suppose your file is here. Dakshita. Okay. Dakshita, look at here. Suppose this is your file. Okay. If you want to move this file or folder, you click on this folder. Okay, Dakshita. Then you go to home menu. You go to home menu. Okay. Then you click on move to option. Okay. Then you click on move to option. So one list box is appear. जैसे ही आप जैसे ही आप मूव टू ऑप्शन में क्लिक करोगे बेटा, एक लिस्ट बॉक्स दिखेगी आपको. इस लिस्ट बॉक्स में आपको ये देखना है, बहुत सारे फोल्डर्स हैं, आपको अपनी फाइल किस जगह पे मूव करानी है. सपोज आपको दक्षिता नाम की फोल्डर कहाँ पर मूव करानी है. सपोज you want to move your folder to डेस्कटॉप में आपको कहाँ करानी है, मूव करानी है. सो यू क्लिक ऑन डेस्कटॉप ऑप्शन. ओके, लुक एट हियर, योर फोल्डर इज मूव्ड. आप देख रहे हो यहाँ पर आपका फोल्डर मूव हो कर रहा है. ओके, चलो अब डेस्कटॉप पे चल के देखते हैं. वेयर इज दक्षिता? लुक एट हियर, आपकी फोल्डर यहाँ पर आ गई. कहाँ पर आ गई? डेस्कटॉप में. पहले हम लोगों ने आपकी फोल्डर कहाँ बनाया था? आई ड्राइव में. अब वो कहाँ पर आ गई? डेस्कटॉप में. ओके ओके. ओह यस यस. मैम जैसे कि मेरे को अपनी फाइल
को लॉक करना है पासवर्ड से। हाँ वो भी बताऊंगी, पहले तो ये वाला, हाँ वो भी बता रही हूँ, अभी बताती हूँ। पहले ये डाउट क्लियर कर ले फिर बताते हैं। ओके, यस अपूर्व, व्हाट हैपेंड बेटा? ओके, यस अपूर्व, व्हाट हैपेंड बेटा? यस मैम। मैम मैम मैं ये बोल रहा था Yes. जो मतलब अगर अपन एक फोल्डर किए तो आप अभी जो तक बताए अब हमको कि कैसे इसको डेस्कटॉप में तो जैसे आप क्लास फोर्थ कॉपी है ना, तो मतलब जैसे कोई और फोल्डर के फाइल्स या एप्स को उसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं बेटा, कॉपी पेस्ट कीजिए। आप कॉपी ऑप्शन बताया ना मैंने, आप कॉपी पेस्ट कीजिए और उसमें ऐड कॉपी ऑप्शन बताया ना, आप कॉपी पेस्ट कीजिए और उसमें ऐड। ओके मैम। Molly, you have any doubt? Nishay, Shaurya, Vaibhav, beta Vaibhav, you have any doubt? Vaibhav, yes Nishay, yes Nishay. मैम फाइल में लॉक कैसे लगाते? फाइल के अंदर मैम फाइल में लॉक कैसे लगाते? दक्षिता ने ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। पहले अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसको क्लियर कर दे, फिर ये डाउट भी क्लियर करते हैं। ओके ओके, yes Shaurya, you have any query? Shaurya, Vaibhav beta, you have any query? Vaibhav, your multiple choice question is completed or not? Yes Vaibhav, beta, you have any doubt? Vaibhav, yes, no, okay. Shaurya, yes Gaurav, what happened? Gaurav, you have any doubt? मैम Yes Gaurav. डाउट नहीं मैम, ये जो टिक द करेक्ट आंसर और फिल द ब्लैंक्स है ना, तो मेरे से पूछ लेना मैम। ओके, अभी नहीं, इसके बाद थोड़ा सा ओके पूछेंगे। यस धानवी, Yes. धानवी यू हैव एनी डाउट? धानवी, नो, ओके। गाथा, you have any doubt? Gatha, no, okay. Samiksha, beta, you have any doubt? Samiksha, नो मैम, नो मैम। okay. Kavya, you have any doubt or query? Kavya, Dhanvi, sit properly. Kavya, you have any doubt? Yes or no? Kavya, you have any doubt? नो मैम। No. Okay. नो Arush, Navya, Suyash, Navya, beta Navya, मैम। you have any doubt? Navya, first you sit properly. Navya, you. मैम Yes. Yes, Navya. Navya, मैम मैं कुछ भी what beta? What beta? मैम मेरे को कुछ भी समझ नव्या, आपको कैसे समझ में आएगा? आप लेट के पढ़ोगे तो कहाँ से समझ में आएगा? फर्स्ट यू सिट प्रॉपरली, उठ के बैठो आप पहले। नव्या, उठ के बैठो। यस, वेयर इज योर कंप्यूटर बुक? शो मी योर कंप्यूटर बुक बेटा। कंप्यूटर बुक दिखाओ पहले आप। मैम मैं पास अभी नहीं है। तो व्हाट बेटा, आपके पीडीएफ है, मैंने आपके पोर्टल में अपलोड कर दिया, वहां से आपने डाउनलोड क्यों नहीं किया? डाउनलोड करके रखना चाहिए ना आपको। कितने बार बोला है मैंने आपको? जब तक बुक नहीं होगी बेटा, आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकाल लो, तभी तो आप पढ़ेंगे, तभी तो आप देख के करेंगे। आप लेट के पढ़ोगे तो कैसे पढ़ाई होगी? मशीन नहीं है बेटा मार्केट से जाके उसको प्रिंट करा लो ना। अब तो मार्केट भी ओपन हो गया है, अभी प्रिंटर मशीन नहीं है, बहुत पहले से कंप्यूटर की क्लासेस चल रही है ना। अब क्लास पहले आप क्या कर लेंगे,
आप नेक्स्ट टाइम अब क्या करेंगे, प्रिंट निकलवा लेंगे. ओके ओके नव्या. यस द आरुष. मैम यस आरुष. मैम एग्जाम में कितने चैप्टर्स आए हैं? चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. चैप्टर 1 एग्जाम में एंड कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? chapter 1 and chapter 2. Okay, chapter 1 and chapter 2. ओ मैम Yes Dakshita, what happened? मैम अगर मेरे को कुछ फाइल में कुछ पेंटिंग्स अपलोड करनी है, डालनी है, तो मैम मैं वो कैसे करूंगी? फाइल में नहीं, फोल्डर पे डालते हैं. ओके फोल्डर पे. सपोज वेट, रुको मैं आपको दिखाती हूँ. Look at here. Wait, my screen. Student, suppose this is my file. Suppose this is my file. Okay. अब इस फाइल को आपको कहाँ पर स्टोर करना है? इस फाइल को आपको कहाँ पर स्टोर करना है बेटा? डेस्कटॉप में जो दक्षिता नाम की फोल्डर बनी है ना, उसमें. तो आप क्या करेंगे? You go to menu option. You go to menu option. Then go to save as option. Then go to save as option. Okay. Okay. Then you click on beta desktop and search where is your folder. Okay. Look at here. Your folder is here. Your folder Dakshita name वाली folder यहाँ पर है. You click on Dakshita's folder and then you write here class 4th students. Okay, then save. Okay, अब हम चल के देखें हमारी फाइल वहां सेव हुई है कि नहीं. दिस इज आवर दक्षिता फोल्डर. दक्षिता देखो यहाँ पर, ये देखो आपकी फाइल यहाँ पर आ गई. ओके, अगेन आई रिपीट, maybe my dear student, here time is over. So in this topic we will continue. Okay, next class we will continue. Okay, in next class we will learn how to lock your folder, and how to save your file in your particular folder. Okay, so goodbye my dear student, goodbye. Okay, ma'am. Bye bye.